प्रीवियस सेशन में हम बड़े भैया से मिले, दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो एटलीस्ट एवरेज प्रॉफिट के कंपैरिजन में स्मार्ट थे. नाउ टुडे वी विल मीट समवन हु इज इवन स्मार्टर देन आवर बड़े भैया. Hello everyone and welcome back to the commerce element. In today's session we will be discussing about a smarter option, that is super profit method to calculate goodwill. अब ये सुपर प्रॉफिट मेथड हमारे बड़े भैया से स्मार्ट कैसे है? प्रीवियस वाले मेथड्स में हमने हमारे फर्म के प्रॉफिट पे ही फोकस किया. वी नेवर कंपेयर्ड आवर फर्म्स प्रॉफिट विद दैट ऑफ मार्केट. We never compared our firm's profit with that of similar firms. हमने खाली हमारे profit पे focus किया, which was the limitation. Now, super profit method, one step smarter, will be considering our firm's profit and the profits of market. And then हम दोनों को compare करेंगे and we will arrive at our firm's super profit. So this is what we are going to discuss using these two practical sums. In the end, I'll give you one more pro tip also, so stay tuned till the end. Let's see what the first sum says. The firm's average profit is 70,000 rupees. It includes an abnormal profit of rupees 5,000. Capital invested in business is 5,50,000 and the normal rate of return is 10%. Calculate goodwill at 4 times the super profit. You have been given with average profit with some adjustment. And आपको बोला है फर्म में 5,50,000 इन्वेस्ट किया. नॉर्मली जो फर्म्स 5,50,000 मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर गेटिंग 10% के हिसाब से रिटर्न्स. एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट गुडविल्स 4 times the super profit. Let's see how it works. You will start with average profit of the firm. अगर average profit like this directly नहीं दिया होता तो we know how to arrive at average profit. So using that we would have arrived at average profit first and then we would have proceeded further. यहाँ पे आपको directly average profit दिया है 70,000 profit and it carries an adjustment of abnormal profit of 5,000. You remember abnormal profit को neutralize करने के लिए we will be deducting it. So your average profit will be rupees 65,000. Underline when you arrive at some amount. Now we will be finding normal profit. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? फर्म हैज इन्वेस्टेड 550 एंड द मार्केट इज गिविंग 10% रिटर्न. सो अगर हमारे जैसे फर्म्स मार्केट में 550 इन्वेस्ट करते हैं तो दे आर गेटिंग रिटर्न्स ऑफ 10%. सो नॉर्मली 550 इन्वेस्ट करके फर्म्स कितना अर्न करते हैं? 55,000. हमने भी 550 इन्वेस्ट किया बट हमने कितना अर्न किया? 65 एवरेज बेसिस पे. सो दूसरे फर्म्स के कंपैरिजन में वी अर्न मोर प्रॉफिट एंड दैट मोर प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट. सो द फॉर्मूला फॉर सुपर प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस normal profit. Remember writing formulas because that carries mark. Average profit is 65,000 minus the normal profit is 55,000 and thus super profit is rupees 10,000. Story doesn't end because we are supposed to calculate goodwill at 4 times the super profit. So goodwill is equals to super profit into 4. Our super profit is 10,000 into 4. So the goodwill will be 40,000 rupees. And we are done. Let's see the second one.
Teddy and Bear are partners of the firm with capitals of 3 and 2 lakh respectively. During the year 2024, the firm earned a profit of 1,50,000. Assuming the normal rate of return is 20%, calculate goodwill of the firm based on 2 years purchase of super profit. Now in this sum आपको capital invested direct दिया था. यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट किया है, 2 पार्टनर्स है और 2 पार्टनर्स के कैपिटल के अमाउंट्स है. 3 एंड 2 को ऐड करेंगे तो वी विल गेट कैपिटल इन्वेस्टेड. अगर टेडी एंड बेयर के टाइप टोटल ऑफ 5 लाख कैपिटल फर्म इन्वेस्ट करता है तो मार्केट उसको 20% रिटर्न देती है. बट एक्चुअली टेडी एंड बेयर के फर्म का 2024 का एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? इट इज 1,50,000. Sometimes instead of average profit you have actual profit as well. So let's see how that works. Answer number 2, and this time we have actual profit of 2024's year 1,50,000 and it is given. Now we will find normal profit. By investing 3 plus 2, 5, normally you will earn a return of 20%. So your normal profit will be 5 lakhs, 20%, it will be rupees 1 lakh. Now we will have super profit. Write the formula because it carries mark. Actual profit minus normal profit. So actual profit minus normal profit and we will arrive at our super profit. So actual profit given is 1,50,000 minus normal profit 1 lakh. Your super profit will be 50,000. Now goodwill is to be valued based on 2 years purchase of super profit. So goodwill is equals to super profit into number of years of purchase, and thus goodwill is equals to 50,000 into 2 years purchase and the value of your goodwill will be 1 lakh and you are done. Like this, in this method हम हमारे फर्म को मार्केट के प्रॉफिट के साथ या हमारे फर्म को सिमिलर काइंड ऑफ फर्म्स के प्रॉफिट के साथ कंपेयर करते हैं. जब हम अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, वी मेक अ स्मार्टर चॉइस एंड thus this method of calculating goodwill is smarter compared to the previous two. Now in the beginning I told you that I'll give you some pro tip. So let's see what is that. If suppose your average profit instead of 65 turns up to be suppose 50,000 rupees, यहाँ आपका actual profit 50,000 है, normal profit remains 55 only. तो जब हम सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला में अमाउंट्स को पुट ऑन करेंगे, एवरेज प्रॉफिट 50 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 55, योर सुपर प्रॉफिट विल बी अ नेगेटिव फिगर. So that is very much possible. Don't get confused that super profit negative आया मतलब मेरी कोई mistake है. No, you don't have any mistake. It is possible super profit negative में आए. In that case फिर आपकी goodwill की value नहीं बनेगी because anyways आप market से 5,000 पीछे चल रहे हो तो फिर goodwill का आएगी. So simply you will write a note, goodwill head डाल के goodwill won't be there as the super profit is negative and you will end up your sum over there. So I hope whatever we discussed in this session is all clear to you.
In the next session, we will go with one last method of calculating goodwill, that is capitalization method. If you have still not subscribed the channel, do subscribe it and press the bell icon so that you never miss any update. Until the next session, stay tuned and goodbye.